Good morning students. Today we will learn chapter number 4, working with tables. Microsoft Word offers a flexible feature of presenting information in a tabular form. A table consists of a number of columns and rows. It is very useful in organizing and representing the data in an effective manner. Creating a table. A table is an organized arrangement of text in the form of rows and columns. The intersection of a column and a row is called a cell. Word provides a variety of ways to create a table. The simplest way to create a table is to click on the table button in the tables group on the insert tab. Data in the form of text or graphics can be entered inside the cells. हमने यहाँ से टेबल लिया है, आप देख सकते हो. दिस टेबल हैज़ 4 columns and 4 rows. Here on this toolbar you can change many options. For example, you can have word automatically adjusts for a table with a shaded header row 1 or for a shaded column 1 or both. You can also adjust the borders and shading of each cell or the entire table from here. If you want to enter any text, then to enter text or data into cells, simply click in the cell and type. To get to the next cell, press tab. Below we have entered some computer lab inventory. We will add up the totals before doing any formatting. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने नाम एंटर कर दिया और भी डेटा जो एंटर करना था डिजिट के फॉर्म में वो भी एंटर कर दिया. अभी आपको उसका क्या करना है, टोटल करना है. तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला बटन पे जाओगे. हियर द फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स पॉप-अप्स. इन दिस केस द डिफॉल्ट फॉर्मूला इज टू हैव इट add everything to the left. Since this is not what we want, we will change this. We will select the number format with the $sign to signify the amount that the equipment is worth. Every table is set up with invisible row and column headings. I have drawn them in here for your benefit. In order to put in the correct formula, you must include the row and column headings. In this case, we are telling it to multiply cell B2 by cell C2. See, ये है सेल B2 और ये है सेल C2. हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे. क्लिक ओके एंड देन आंसर अपीयर्स इन सेल D2. यहाँ पे ये है सेल D2, यहाँ पे आंसर अपीयर होगा. ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है जैसे कि हमने पहले किया. सेम. अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग. हम अपने सेल पे बॉर्डर्स और शेडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं. You can enhance the appearance of a table by applying a variety of borders and shading styles. To add borders and shading, follow the given steps. Select the entire table by clicking on the table move handle. Click on the design tab. Change the line style and line width by clicking on the dialog box launcher button of the draw borders group. Click on the drop down arrow next to the borders button and select the borders and shading option from the list. The borders and shading dialog box appear. See? Sorry. अरे ये
है बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. चूज द ऑल ऑप्शन, सिलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन मेनू. Likewise you can select the thickness of the border. Click on the apply to text box and select the table option from the drop down list. To give color effects to a table, click on the shading tab. Click on the drop down arrow under the fill section. The color palette is displayed. Choose any shade. Click OK. Notice the change in the appearance of your table. See table and table tab. Select borders and shading. ये रहा बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन, इसको हमें सिलेक्ट करना है. ये सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि ये टेबल जो है वो, ये टेबल तो पहले से ही हाईलाइट है. उसके बाद हमने बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन चूज़ किया है. ऑन द बॉर्डर्स tab you can change the border style. You can scroll down for more options and color. You can also turn off or on the border itself by clicking any of these buttons. In this case we chose a thick double border and colored it purple. देखिए पर्पल बॉर्डर आपको दिख रहा है, पर्पल है बॉर्डर. Since the column headings should be bold and centered and the numbers in the column should left align, we will do the next. Using your mouse, click and drag over the first row, or you can hover to the left of the first row and click. This is the fast way to highlight the whole row. आप देख सकते हो कि इस तरीके से बॉर्डर एंड शेडिंग यहाँ पे अप्लाई हुआ है. इसकी इफेक्ट नज़र आ रही होगी आपको. Click and drag your mouse over the cells as shown to highlight them. Click the left align button to the toolbar. The numbers all move to the left or the cell. To insert or delete a column or a row. अगर आपको कोई कॉलम और रो डिलीट करनी है तो, इंसर्ट करनी है तो राइट क्लिक करें, फिर इंसर्ट पे क्लिक करें, फिर इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू अबव द रो, इंसर्ट सेल्स, ये सारे ऑप्शन है. इंसर्ट बिलो, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो. To insert another row at the bottom, simply click in the last existing cell to the right. यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ये जो लास्ट रो मिल रही है वो हमने लास्ट में इंसर्ट करी है, वो हम इंसर्ट कर सकते हैं. To insert another row at the bottom, simply click in the last existing cell to the right. Splitting cells. Splitting a cell means dividing the selected cell into separate cells. To split a cell, following the given steps. Select the cell that you want to split. Click on the layout tab. Select the split cells button in the merge group. The split cells dialog box appears. Define the number of rows and columns into which you wish to split the selected cell in the respective spin boxes and click OK. See, split cells है ये. एक सेल को आपको अगर अलग सेल में स्प्लिट करना है तो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज दिखानी होगी, देन प्रेस ओके. मर्जिंग सेल्स. स्प्लिट करना मतलब अलग करना, मर्ज करना मतलब अगर दो सेल है उसको मुझे एक में ही एक ही बना देना है तो हमें मर्ज करना पड़ेगा. Sometimes data is split in numerous segments of a cell and you want to combine it in a single cell to give it a better look. Merging the cells provides a way to consolidate data in one cell. Select the cells you want to merge. Click on the layout tab.
select the merge cells button in the merge group. The data gets merged into a single cell. Resizing tables. टेबल को कैसे रिसाइज करना है? You can increase or decrease the size of a table manually by using table resize handle, but Word also offers ready-made solutions to resize the table. Resizing of a table can be done by AutoFit option that offers flexibility to automatically resize the column width based on the size of the text in them and set the table width based on the window size. You can even convert it back to setting fixed width to columns. Click on the AutoFit button in the cell size group on the layout tab. See, ये है AutoFit button. The AutoFit drop down menu displays 3 options as shown in figure. AutoFit contents. It adjusts the column width according to the data entered. AutoFit window. Selecting this option will adjust the table according to the margin set on a window. Fixed column width. The column gets fixed and the text is wrapped in the same cell. Calculations in a table. You can perform calculations on the numeric data entered in a table. Select the layout tab. Click in the cell where the result is to be displayed. Select the formula button in the data group. The formula dialog box appears. Note that the sum formula is already displayed. Click OK. The result appears in the selected cell. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला बार का यूज़ कैसे होता है, हमने टोटल में यूज़ किया था, ये वही है कैलकुलेशन करने के लिए. Updating calculations in a table. Sometimes you may change the data or add any new data in a table. Word provides the facility to update the changes to update the total sum in a table. Select any cell and change in its data. Now select the data of the cell where the total sum is displayed. Press F9 key and observe that Microsoft Word automatically updated the calculations. थैंक यू चिल्ड्रन. इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपके 5th स्टैंडर्ड के ग्रुप में दूसरा प्रैक्टिकल सेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा.